sure you have the audio and the video sound. But I could only click the audio. Okay, you have double screen, single screen, good. So visualizing the EEG brainwaves of a yogi. Please just let us know that the sound is okay, because we'll have some videos to go along with this. We are Dr. Alaric and Cynthia Araninder, the Brain Research Institute in Iowa, USA, and international faculties of Maharishi Vedic University in Vlodrop, Netherlands. And we're project coordinators of activity in Tirumala, Andhra Pradesh. So, success, because yoga basically has an output. Yoga means we will bring success to this birth. So, how do we gain success? Slide. Success, the primary issue with success is how to minimize uncertainty. How do we minimize the changing fabric of our planet, of our society, of our physiology? Because uncertainty seems to be rising quite rapidly. Next. In the world today, we're now in an exponential phase of change. For many, many thousands of years, very little happened. Now, within short periods, many things are happening. Obviously, world population has become exponential. Next. This is seen throughout finance, technology, in every aspect of human life, there's change. That change is developing at an exponential rate. The difficulty is that human beings need to face that with the power of yoga. They need to face that exponential change. The difficulty we find is that human adaptation, lacking yoga, is not keeping up with the change. The convergence of global technologies are going to continue to disrupt every single aspect of society. And the world in the next decade won't be recognizable from what we know today. We need to help human adaptability. We need a technology to improve our adaptability, our creativity, our intelligence, our health, and to secure our happiness. And the question is, how can we do this? And through this conference, we want to make the scientific, documented argument that yoga can fulfill this need of our time. We can find that technology in the Yoga Sutras. And for those who are very familiar with Yoga Sutras, the second Yoga Sutra of Patanjali defines yoga. And we'll define that in terms of brain physiology. So in the Yoga Sutras, we find Yoga Chitta Vritti Nirodha in the second sutra, a very simple but complete definition we're all familiar with. It should be translated as yoga is the complete settling of the activity of the mind. It's very important that we recognize this version of the translation. It has nothing to do with a focused or control. It has to do how the mind can completely be settled. And that, of course, can only happen in an effortless approach. So let's take a moment and think about the mind, because the mind has many levels, similar to the ocean. The ocean is active on the surface, but we also know that the mind is active on the surface, just like the ocean. But deep within the ocean, there's silence. The ocean is quiet at its depth. Likewise, the mind is also quiet deep within. The mind has many levels: active, less active, less active, more silent, and then a complete settling, the inner self, yog, samadhi. This is the range of the mind from the surface
all the way to samadhi, which is the foundation of yoga. We want to establish samadhi. We want to establish yoga because yoga is the complete settling of the activity of the mind. We need to find a way for the mind to completely settle. And as we know from all the great works, that trying has never succeeded in transcending. So we need a scientifically validated, effortless Vedic technology of consciousness. We need to find a way and verify transcending. Scientifically validated Vedic technology to fulfill the second Yoga Sutra, where the mind, without effort, without control, without any intellectual or philosophical framework, can automatically experience that inner self, Atma, in samadhi, the direct experience of yoga. These programs of transcendental meditation and its advanced aspects, founded by Maharishi Mahesh Yogi from his teacher, Swami Brahmananda Saraswati, have been shown through over a half a century of research to fulfill the dictates of the second sutra, and actually all the sutras of Patanjali Yoga Sutras. During transcending, the activity of the mind settles down. An effortless, completely spontaneous, natural process. The mind transcends the active thinking level and experiences the deep inner quiet of a settled mind, samadhi. This is the experience of yoga. The access key to this, the experience of samadhi, and then the stabilization of samadhi. We want to first experience it very simply and clearly, and then we want to make it an all-time reality, kaivalya. We're going to talk about the research into this and how we can use the mind to experience this inner Atma, unified field. There are three fundamental forms of meditation. Many of us know one of concentration, where one controls the mind and focuses it. There are contemplative techniques, which also have some value, where the mind is thought on some beautiful phrase or idea or some Sanskrit shlok. But there's a third type, and that gets us off the surface level of effort. As long as we concentrate or contemplate, there's no systematic path to transcending. The mind is always kept or brought back to that surface level of participation and effort. With transcendental meditation, there is no effort, spontaneous settling of the mind. Transcending requires no concentration or contemplation. If you want a systematic approach to yoga, to samadhi, it can only be done based on the natural tendency of the mind to go within. And transcending is a unique experience that works for everybody. It works the first time, it works every time, because it's part of the biological structure of the human brain and the human brain networks. So it's really important to realize that transcending is effortless and natural, moving from the surface level. And over the last more than half a century, we now know, based on research, that this samadhi is related to a great settling of the entire physiology, which means a settling of the mind, suspension of breath, shift in hormones, shift in the skin resistance, lowered heart rate, and in particular, maximally orderly brain waves. To keep this within the context of this talk at the yoga conference, we're going to focus on the value of samadhi in yoga in terms of human brain functioning. Because transcending allows brain activity to align with this inner unity, samadhi. Please enjoy this short video. And after the video, we'll present some more information about brain activity.
Your brain is the master mind, the control center behind everything you do and everything you want to be. If you want to be successful, your brain is responsible. If you want to be happy and healthy, your brain is responsible. In this video, we're going to demonstrate with EEG brainwaves how you can easily unlock your latent brain potential and awaken your powerful supercomputer within. What is the secret to utilizing our full potential? And the answer to that question is transcending. Easily, the mind and body settle down using the technique of transcendental meditation. When the mind and body are settling down, what is happening to the brain during transcendental meditation? The whole brain physiology transcends, and brain activity identifies with the unified field of consciousness, the field of perfect order. This transcendental experience is training the brain to order. And when you increase the order in your brain, you're increasing your brain's potential. With each meditation during transcendental meditation, more order is infused in brain activity. And as we learn, this leads to increase of brain potential. And what this does is very important. It stabilizes more and more success, happiness, and health in daily life. Now it's time to look at some EEG brainwaves. We'll be looking at practitioners of transcendental meditation, some women that have been practicing transcendental meditation, and then we'll also look at the EEG of non-practitioners of transcendental meditation, and you'll be able to see quite amazing difference. You are seeing here is the computer screen of the EEG. The bottom blue area is the most important, and it is the computer calculation of the relationship of the left and right frontal regions of the brain. This relationship is calculated on a scale from 0 to 100%, brain coherence or brain orderliness. When the white line reaches the top areas, that means maximum brain coherence or maximum brain orderliness. And when the white line goes to the bottom, that means minimal brain coherence or brain orderliness. Now you're seeing the EEG of a non-practitioner of transcendental meditation, sitting with their eyes closed. And we know that minimal orderly brain function. Again, we're going to look at alpha frontal coherence. And you're looking now at a practitioner of transcendental meditation. They're now closing their eyes to start the practice of transcendental meditation. That line way up high is maximum brain orderliness, only seen during the practice of transcendental. Notice the very high levels of sustained orderliness. This experience is training the brain to order. This is the experience of samadhi. This is the signature of transcendental meditation. And as we remember, when we increase the order of our brain activity, we increase our brain's potential. This is extraordinary. To have brain orderliness above 90%. And this brain orderliness correlates with everything good
in life: health, happiness, longevity, intelligence, Now we're creativity. going to be looking at the EEG of a non-practitioner of transcendental meditation. When you look at this EEG screen, you see 4 lines going up and down, and at the top you see where it says alpha left coherence. That's of the left hemisphere, front and back, and right coherence, the right hemisphere, front and back, and front coherence, left and right, and back coherence, left and right. Notice how Please they go up take and down. notice how the lines display a relatively unstable coordination. Keep this in mind when viewing the meditating brain. This is an average brain. I will show you one of a meditator. Looking at all the 4 areas This of the brain. person has not started to practice transcendental meditation yet, but you can see quite a difference from the non-meditator brain. The lines are much more together as opposed to the non-meditating brain, which were moving in an uncoordinated fashion. So these are together. When this and person starts TM, all the areas of the brain will immediately and spontaneously start working together in a coordinated fashion. You have probably seen that they have started the practice of transcendental meditation. This is remarkable. When all 4 lines are at the top, this means total brain functioning, only seen with the practice of transcendental meditation. This is that direct So experience. it's quite exciting what we'll be looking at now. We're going to be looking at a non-meditating brain. And you can see the EEG. There are 3 blue areas. We have the top, which is alpha frequency, a slower frequency, which represents the knower or rishi. And we have beta, which is faster, and that represents the process of knowing, or devata. And then the bottom is gamma, which is the known, chundas. And this is how the brain, with these frequencies, puts together our reality. Let's look now at a practitioner of transcendental meditation and see their EEG while they're meditating of the alpha, beta, and gamma coherence. These 3 frequencies construct our reality: alpha, beta, and gamma. Seeing them all maximally coherent across the entire brain is allowing you to visualize enlightenment in brain functioning. So you're visualizing the second Yoga Sutra, the complete settling of the activity. In conclusion of our video presentation, we're now seeing the EEG of a non-practitioner of transcendental meditation. And of course, the lotus, you see it opening and closing, and it's closing into a bud and not revealing and not blossoming when our brain is not working together, when it's more disorderly. But the more orderly it becomes, the more the lotus blossoms and unfolds our brain potential. Now let's look at a meditating brain. It's so beautiful to see the pink lotus in full bloom, allowing all the petals to present the wonderful gifts life has to offer. We know our birthright is to actualize our full potential and make maximum use of our most precious resource, our human brain. Now, with the help of EEG, we can see that transcendental meditation allows us to make that birthright a living reality. So enjoy the blossoming of your full potential
and thank you for your participation. Thank you, Dr. Cynthia. That was very sweet. I think everybody is now appreciating the fact that the human brain is capable of a remarkable degree of brain orderliness, which is not found normally and is not available in modern education or technological development. Only through yoga and the implementation of Patanjali's Yoga Sutra, through the complete settling of the mind, through this effortless natural technique, which is practiced all over the world by people from all ways of life and all religions and all persuasions. It's independent of any individual aspect of a human mind. It only relies on the fact that the human mind is capable of transcending by utilizing the technologies of yoga. And through Maharshi's in this Transcendental Meditation program and modern science, we see that yoga and Patanjali's Yoga Sutras can move out of the realm of education per se, out of intellectual digression, out of controversy, and can be applied everywhere in society to help every individual develop their full potential and for society to develop its full potential. And so we have a few more slides in this vein and some more slides on EEG if you'd like. So there are different frequencies, as already mentioned by Dr. Cynthia. And these different frequencies represent different aspects of cognitive functioning. Everybody's heard of alpha, and there's beta and gamma. You can see that in a 1 second trace, alpha goes up and down, let's say 10 times a second, beta 15 to 20, and gamma more than 30 times in a second. These three frequencies together create your every experience. Because to experience, you need to be observer, observing some observed, the knower, process of knowing and known. And alpha has been connected to the wakefulness or alertness of the observer. On the other extreme, to be able to create an object in your brain, the gamma, the fast frequencies are required. And to link that object in your brain to your awareness, your inner awareness, it requires this intermediary beta frequencies. So together, these three frequencies, the components of experience, create our life, how we see the world, how we create our reality. And so if we're going to have yoga, if we're going to have unity and samadhi and enlightenment, kaivalya, then it requires that all frequencies be working in an orderly fashion. So these three screens, top, middle, and bottom, are that alpha, knower, beta in the middle, process of knowing, and gamma at the bottom, the knower. So the top is our awareness, the middle is the connecting factors and networks, and the bottom is how we very quickly can stitch together components through our senses of an object that we attend to. So these three frequencies work together: observer, process of observation, and observed. This is going on right now as you're watching the screen. Your mind is using your alertness and your ability for your visual sense and your auditory to construct a particular object and then link that to your awareness. Any one of these frequencies not working properly, there'll be a reduction in the quality of the cognition. In the extreme, you'll fall asleep. In the other extreme, there'd be some psychotic episode in terms of the gamma. So alpha, beta, and gamma. This is just a short introduction to the frequencies underlying your experience. So if we want to stabilize samadhi, it's one thing to experience it, but just like going to a gymnasium, by repeated practicing something, you get better at it and become stabilized, whether it's practicing the violin or improving your muscular tone or learning a new language. There's a developmental sequence of how to stabilize anything, and that includes samadhi. And the research shows that. And we're going to show you now a sequence, an individual practicing TM, of how they stabilize samadhi till they get to the point of kaivalya. So here's a baseline.
remember the three frequencies: alpha, the knower, awareness; beta, the process of knowing; and then finally, how you put together an object. Samadhi, we'd imagine that all of them would be maximum. And if it's in waking life, we would imagine that would be compatible with the experience of Kaivalya. So let's move on through this baseline over time. Let's watch this person as they meditate on a regular basis. Here's after a couple years of practice. You can see that the top, the alpha, really hasn't changed from the very beginning of meditation. The alpha in the front of the brain occurs almost from the very beginning of practice. So right away, a person has benefits. But after 2 years, you'll notice that the beta and the gamma are starting to rise, even though there's very little change in the front of the brain, because that's already been maximized starting on the first day. But over time, we're going to see that the other two frequencies, which are much more difficult to organize, will begin to rise up. See how they're rising up between the 24 and 64 months? There's 24. Watch, when you go to 64, they're rising. If we continue on with this person's development, nothing happens overnight because this is a very natural, effortless process. Notice how high now at 85 months, all three frequencies are now very, very high. And this would be true across the whole brain, as you saw in the video. So by 85 months, basically the individual, in this case, has reached a point of Kaivalya in which the whole brain is now coherent, stabilizing samadhi shown in global brain coherence. So broadband means all the frequencies. And so you can see that there's a number of lines here. And then over time, that lines, which indicate all the frequencies across all the parts of the brain, right? Time and space, all the frequencies, time, across all the brain, space, will rise. This is eyes closed relaxation. Person has a pretty good brain here, pretty orderly. To go into TM, here's 20 days of meditation. Only 20 days of practicing TM. And look how orderly, especially the front and the back of the brain are. It's relaxation, and this is TM. So the practice of transcendental meditation, because it is effortless and automatic and natural, allows the individual to experience yoga on the very first time and every time when practiced in an effortless, easy way. And that over practice, 20 minutes twice a day or so, that one can stabilize that in awareness. So we're very appreciative of how the Yoga Sutras can benefit the individual. And since there's a little time here, we thought we'd bring up another Yoga Sutra, Tat Sanidao Vairagyaha. This can be interpreted, translated, as in the vicinity of Yog, Tat, in the vicinity of Yog, Tat. And Yog is that unifying, coherent, integrating influence. Next. We see conflicting tendencies do not arise. That's an interpretation of Tat Sanidao Vairagya. In the vicinity of Yoga, conflicting tendencies do not arise. That means in the vicinity of unity, all the different diverse conflictions settle down and harmony prevails. The distinctions don't go away. The tendencies do not go away. The diversity is not eliminated. What is eliminated is the conflicting tendencies go away and are spontaneously homogenized, both for the individual, for society, and the world at large. And after 40 years of research, we've now published over 45 articles showing that when individuals and groups meditate together in different parts of the world, US, Asia, Russia, Africa, South America, India, wherever groups come together, they create coherence. That means the individual, when they become orderly in yoga, actually create an influence at a distance. An individual influences their environment. And so an individual who is acting more orderly, having more orderly brain waves, and again, we show this in research,
can actually create an influence in the environment. And here is one of the examples that over a several month period, 8-month period in this case, in Washington, D.C., in which time there was a lot of crimes. So the axis going up on the left is all the homicides, rapes, and assaults per week. In other words, all the very violent crimes in Washington, D.C., the capital of the U.S. And you can see as you move from the left to the right on the timeline, on the left, we start in January. And in January, because it's cold in Washington, D.C., people aren't out and about. And so the crime rate is what it is on an average. But once you get into springtime, towards the middle, people go out and they start acting out, and the crime rate moves dramatically upwards. It almost doubles. But then you see in that pink area, between June and the end of July of that summer in 1993, in which all the research was done, the time series at the top with the dotted line shows what would have happened without the group, where the black line shows the actual crime. Now, this is highly significant difference between what was predicted, what would have happened, and what actually did happen. This is highly significant. Notice the p-value. The p-value here is 0.00008, which means this is not by chance. This is a direct intervention of a group of individuals practicing Maharshi's Transcendental Meditation and Advanced TM City program. And they're able to change an entire behavior of a city, Washington, D.C., and significantly reduce violent crime by doing nothing more than meditating twice a day together in a group. And of course, this has been done at different times around the world. Here's another study of a regional conflict. This is the conflict in Israel and Lebanon. And the TM group size, as it oscillates, reduces conflict in Lebanon. So again, there's a direct relationship between a group size of people practicing TM and the conflict in a particular region. So if the individuals in India, individuals in Asia, or any place in the world wish to reduce conflict, research shows the simplest and most effective way of doing that is to bring a group to create a coherence. You get a whole group, and it's actually possible to create a peaceful, harmonious world through collective consciousness. This is just another example of how Maharshi's Vedic technologies can bring fulfillment to Patanjali's Yoga Sutras. And if there's a little bit more time here, we might go on to one other thing. I'm trying to play this video, okay? Okay. We'd like to play another video for you to enjoy, and then there'll be time for questions and answers, which we're looking forward to very much. So now we'll... About Maharshi Vedic pundits. Maharshi was very interested to reestablish the Vedic tradition and the pundits. In order to do that, one of the most important aspects of being a Vedic pundit is to be able to function and do yajna from the level of samadhi. In order to do yajna from the level of yoga. Talking and reciting from the surface level has its value. People can hear you. It has some small effect. But projecting Vedic performances, yajna, from the deep level of yoga, from samadhi, from atma, that's where the power of devata is found. And that's where the power of yajna is found. And we've shown now through research and personal experience that Maharshi's Transcendental Meditation and Advanced programs, when combined with Vedic pundits, can bring fulfillment to Yoga Sutras in terms of creating harmony of behavior. So let's show that video. So, Alec, if you could keep talking, I'm going to stop the screen. I think I have the wrong video. I have to get the right video. Okay, so you're going to play this? Oh. Well, I will, but I have to get the right video. All right. So
the beautiful thing, and the reason we're so grateful for this opportunity, is that much of the discussion about yoga, as delightful as it is, remains in some academic or a world of thought and discussion. And that's beautiful. And I personally enjoy that very much. And there's some beautiful scholars that can talk eloquently about the Yoga Sutras. What we're offering here in this short presentation, and we're very pleased and humbled to be able to offer to you, is actually there's a technology, Maharshi's Vedic technologies, which actually can bring the Vedic technologies of Patanjali Yoga Sutras lively in the human physiology of every person. And by doing that, not only bring samadhi or kaivalya, but can bring about a more harmonious, successful, and peaceful society. It moves Patanjali Yoga Sutras from an academic discussion level to one of practical importance. I cannot emphasize strongly enough the significance of the practicality of this ability that Maharshi gave us. You gonna play this? You got a double? Single? Okay. Blank. Oh, here we go. Samkalp Siddhi, Maharshi Ji's mantra and Sunday Ved Pat. Vedic recitation can be either fast and loud or low and slow. Normally, we experience it fast and loud. We're going to discuss this issue. When you have sound, you can see, using different equipments, the sound and the silence. Using an oscilloscope, for example, you can transform your hearing or the sound quality into a visual demonstration. So when there's a tone, the oscilloscope shows you the waves of that tone. And so we're seeing the sound fluctuations of a tone, just like a pundit going, ah. These are just waves of a particular frequency. Now what happens is that if we slow it down, we can see the waves settle into just silence. This is that Yoga Sutra number 2. The complete settling of the mind means that the influences, the sound fluctuations move out from that level. Let's look at, play the sound, sweeties. This is a normal pundit presentation. It's all mantra. Cynthia, can you play that sound? I don't hear, but anyway. So basically, there's a lot of sound here, and they're reciting very fast. Because the pundits are been trained to do it this way, loud and fast, the sandhi, or the gap between syllables, the gap between the syllables is missing. But if we can awaken the full Ved, it'll require that we awaken Brahmana, because mantra and Brahmana is Ved. So mantra is not enough. We need to have Brahmana. We need the gaps. We need to have that slow and silence. We need sound and silence. Mantra and sandhi, or the gap, or Brahmana. This is Ved. Ved is not the mantra. Ved is the mantra appearing from the ocean of Ved, from Atma, from the gap, from sandhi. So mantra and sandhi.
when the Vedic pundits go low and slow, there's an opportunity for the individual pundit to project from the level of Devata, from the level of Devata, their sound. Okay? That's because either they live on the surface Sankalp level, or they live on a deeper Sankalp city level, or they live on Raj Sankalp city level. It's not clear, darling. Becoming the voice of Ved. The true voice of Ved is when there's Sandhi. Is it clear now? I have no sound. Okay. So even though our sound has not worked on this, the whole point here is that the Yoga Sutras, when practiced properly, allow the performance of pundits to work from para, from samadhi, from atma. It's only from the level of atma, from the level of para, not from Vaikari, not from Majjhima, not from Pashyanti. No sound sweets. Well, you should have told me ahead of time and I would have fixed it. Well, there you have it. So there's different levels of speech, and those different levels of speech I'm going to different levels of effect. I'm going to fix it, okay? So, I think we move on. well, no, it's just let it finish. Thanks. Okay. That was fine. Then it went off. You heard that recording of Maharshi's Vedic pundits. You notice how it was very low and slow with that gap. Very Yep. This is Rik Veda when it's low and slow. This is Vedic recitation from the level of para, from Atma. This is Vedic recitation in which the Sandhi is reinserted. Veda is mantra and Brahmana, mantra and Sandhi. Projecting speech from the level of Atma. So this is Sanskrit for mantra and Brahmana together create. If a pundit does not know how to transcend, they're not capable of projecting from Atma. And if you cannot project from Atma, then the Sankalp is left on the surface of life and not at the level of Devata. Daily practice of TM, experience of Atma, allows pundit to become the voice of Ved. Again, the benefit of Yoga Sutra, complete settling of the mind. Maharshi has trained tens of thousands of pundits to do this. Let's see the sound fluctuations when they're low and slow. It'll be different from the normal
experience once we come out. This is projecting you made the yajna the level of devata, full devata support for maximum benefit of the yajna. This is Raj Sankalp Siddhi level of Sankalp. We need full support of the Devatas by fulfilling the Sankalp of the Yajna. Sankalp Siddhi, Maharshiji's reinstatement of mantra and brahmana for the Vedic path. Because there are 4 basic levels of speech, and you need to experience yoga to bring about the full value of devata. Mantra and Brahmana together constitute Ved. This is Atma-based Vedic recitation. Raj Sankalp Siddhi. And it just means these pundits have access to that complete settling of the mind. They can perform their daily activities of yajna on that deepest level of the mind. This is the same we're offering to all the individuals. Every individual can function for the same Sankalp Siddhi level. You don't have to be a pundit to benefit. Every individual's success depends upon mantra and brahmana, not just pundits doing yajna. So we want to thank everybody. We've been celebrating Maharshi's Transcendental Meditation Advanced Programs, and we've shown you in these few minutes here, we appreciate your attention, that how the brain can adapt through neuroplasticity and not only access yoga, the complete settling of the mind, but stabilize it into Kaivalya and Brahman consciousness. And it can be applied for the betterment, not only of the individual and their enlightenment, but for the betterment of society, for progress, reduction in conflict, reduction in violence, greater health, greater life. And it can be applied again to the traditional values of the Vedic pundits of India, or any academic or organization that wishes to contribute to world peace. So it's a technology for individual enlightenment and world peace. And with that, we have a few minutes left. We want to thank you for your attention and your kindness in inviting us. We appreciate the organizers wanting us to share this with you. It's been a joy. We'd like to open it up for discussion. Any questions, please? We welcome them very much. Any question is fine.
I'm not sure who's going to organize that, but Yeah, any questions anybody wants to raise or to know? Otherwise, I will ask a few questions from the side of the audience. Yes, Mr. G. Dr. Alaric, thank you very much for your nice elaboration. A very scientific interpretation of the Vedic activities in India. And Maharshi Yogi was representing the Vedic knowledge of India. So, how do you conduct the process of EEG on different groups? Do you call them for the, machines to measure all these things, or you go in the same institution, you establish your all the, machines of the medical science? How do you conduct this process and you take the EEG? Yes, thank you, Mr. G. So the question was, how do we get the data and how do we use it? I will give you a specific example. A couple years ago, the Narayan educational system invited us to use Maharshi's Transcendental Meditation to improve the quality of their schools. They have very good schools, but there's difficulties in children developing their full creative potential and developing to be a whole human being. And they recognized this and wanted us to add this element of transcending or the experience of yoga to help the students develop their full life, their full potential. So for example, we worked with the Nellore Medical College in where was it, Cynthia? It was in Nellore. Yeah, Nellore. I'm sorry. I was thinking Vellore, but we were in Nellore in Andhra Pradesh, and Department of Neurology and the whole group there. We organized a research program. We returned to Tirupati, and we went to one of the high schools, a residential high school, and we taught control groups. We had two groups, one 350 learned to meditate, and the other group was control group. And so we took the EEG before they meditated. We took 10 students in each group. We did their EEG before they meditated. And then once they started meditating, we took the EEG another couple of weeks after they learned. And the differences were significant and remarkable. We also did psychological tests and behavioral tests and found that they all changed quickly. In fact, most of the kids found changes in their exam scores within a couple of days. Okay. So it's a very simple technique to be applied. And we've taught thousands of students now in Tirupati, and there's programs all over India. So it's a simple program to implement. It doesn't take a great deal of time, but it allows each student to develop their full creative potential from the level of. Can I just tell about the, we did some neuropsychological tests on all 700 students. Would you like to come on the screen, Dr. Cynthia? Yes, I would like that. Thank you. Sorry. You would like to come on the screen? Yes, you have. Let us. Okay. Thank you, Mr. G, for inviting me. Yeah. No, you are on the screen. Okay. Okay. So we did neuropsychological tests on 700 students, and we did that before we started the project, and then we did it afterwards, 3 months afterwards. And we had highly significant, dramatic increase in self-confidence, self-awareness, less fatigue, less anger. It was really quite remarkable. And just like Alaric said, many of the most naughty boys, it was a boys' school, after they learned transcendental meditation, many of them became toppers. So it was quite a very powerful and very significant research project. We have a whole video on it if you'd like to see it. So you use the questionnaire for the different, different tests like psychological and others? Yes. Questionnaires. The yes, Vedic questionnaires developed by the psychologist or the questionnaires. Yes. Questionnaires. Yes. For the psychological test. Yes. Questionnaires. Okay. Yes.
that are validated. Okay. International. Are there any Okay. other questions? Okay. So next time when Corona is over, then I'll call you in our university, Dr. Alaric and Dr. Cynthia. You must be ready to come to Ayodhya. Yes. We'd love to come to Ayodhya. I think one of our main coordinators is connected. Sandhya, would you like, she will be coordinating a lot of the activities when we come to Ayodhya. Okay. Sandhya, would you like to give your experience of teaching and creating large groups of yogic flyers? Yeah. And also Sanjay, Tom this- Larasan is with us. Tom Larasan can experience because he was one of the teachers in Narayan when we were doing the research project. Tom Larasan, do you have your experience? If you unmute. Please unmute Dr. This Is Tom Larasan, if you unmute? Yes. Sangars. Please So unmute. Sandhya or Tom Larasan, the Okay, hands now are you up. are unmuted. Good. Tom Larasan, go ahead. Go ahead, please. Yes, good morning, doctors, both of you, Senior Ma'am and Alaric. Yes, sir. I'm holding the phone. Namaste. So I have a very good experience with Alaric sir and Ma'am, Sandhya Ma'am. You know, the school in which where I was working was really a terrible school to work with, not the management, but the children. They were really very naughty. Okay. Even now also they are very naughty. It was really the filtered students of the society come usually to the residential campuses, that too to the rural part of Andhra Pradesh, that is from Chittoor district, because many of the parents, they go to abroad like Kuwait or Arabian countries like Dubai. Goodbye. Usually they leave the children when they are kids like 2 to 3 years old. They leave the children here itself to their grandma and grandpa. They go abroad to earn money. What happens to the children's character? Their attitude completely goes down to down. The development of their mind, brain. I can say mind, not brain. Okay, the mind never gets matured, and they are filled in the schools like where I'm working now, Narayan. Okay. So even we have some videos over this. For example, Nag Narendra, I think, am I right? Dr. Nag Narendra, a terrible, like a rowdy who was against everybody, became so polite in his attitude, so calm, and even he became one of the toppers in academics. So that's what the change that I have seen from the students once we had started TM in our schools. Among the children, especially in residential campuses, they will long for happiness. They will long for pleasurable things which give temporary happiness, and they will also have they also would like to have always entertainment, not in academics. Even many of the principals didn't agree with, but once they saw the result, they agreed. They started cooperating. Even I am also trying for 2 more schools. I think Ma'am Sandhya would have brought this to your notice. School Vidwas, and I'm also trying with another school, Sheshadri. We'll hope we'll get those schools because they are also longing, wishing to have such a background which takes the human soul to the deeper and deeper. That's it from my side, Doctor. Thank you so much. Anything else? Thank you. Thank you. Thank you very much, Tom Larasan. He was the English teacher at the Narayan school. So he was responsible for teaching English to the students. And so he knew those students very, very well. Okay. And so Tom Larasan, thank you. Sandhya, we have just 1 more minute left. If you'd like to say something, Sandhya, could you unmute? Can we see your video? Sandhya, can you turn on your video? Okay, so Ms. Gayatri, please Sandhya, go ahead. close. Yes, sir. Please Good morning, sir. take a Good minute. morning. We have just about 1 or 2 minutes left in our time. Okay, sir. Any questions anybody would like to ask? I think I have taken the all questions. So thank you very much, Dr. Alaric and Dr. Cynthia, for your nice gesture and immediately accepting our invitation when I had requested you. So keep on remembering us, and whenever I
and institutions and me self request for any lectures or cooperation, please keep on providing us, and we shall be benefited. The university will be mobilized. The institution of the physical education, sports, and yogic science will be mobilized to you, and will be very very thankful and grateful to both of you, Dr. Alaric and Dr. Cynthia. And we pray to God that you must remain healthy, happy, and very effective in your life, dynamic in your life. So thank you very much, Madam and Sir both. Thank you. Thank you, Mishra Ji. And I want to thank Namaste. Dr. Rammanohar, Namaste. Namaste. Avadh University. Namaste. Yeah. Namaste. And thank you also, Gayatri, for your lovely introduction. Thank you so much. Yes, Gayatri, that was very beautiful. Thank you. Thank So you. Thank you. everybody Well, continue yeah. on with this international. Everybody continue on with your International Day of Yoga. Thank you. So, okay, now, so we are going to have the next session. Thank now, you. I would request Anurag Sonidi. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead with the next session. थैंक यू सर। डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित योग विज्ञान विभाग, शारीरिक शिक्षा, खेल एवं योग विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित द्वितीय दिवस के कॉन्फ्रेंस के तीसरे तकनीकी सत्र में हमारे बीच जो अगले विद्वान हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर विनोद कश्यप जी, सर प्रणाम आपको, आपका स्वागत है सर। सर आप अपना नमस्कार सर। सर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें इससे पूर्व मैं आपके बारे में संक्षिप्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। सर आप वर्तमान समय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के चेयरमैन हैं। आप INO से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से काफी दिनों से आप जुड़े रहे हैं। संयुक्त महासचिव के रूप में भी आप कार्यरत थे, और आप द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेमिनारों द्वारा एक ऐसी बृहद श्रृंखला चलाई गई जिससे देश से ही नहीं वरन विदेशों में भी लाखों लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों को अनुभव किया और उससे प्रभावित भी हुए। इस कोरोना काल में जब हमारा पूरा देश घर के अंदर बंद था, तब इसी प्राकृतिक चिकित्सा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को अपने जीवन सत्य को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। सर आपके द्वारा काफी प्रयास किया गया है प्राकृतिक चिकित्सा को लोगों तक पहुंचाने में। सर आपका स्वागत है। आप सर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अनुराग जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर SS मिश्रा जी का और राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी मुझे अवसर दिया कि आपके साथ में बातचीत करने का। ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, जो होलिस्टिक हेल्थ और स्पिरिचुअल के ऊपर, योग के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7वां योग दिवस हम लोगों ने कल मनाया, और उसी में अनेकों कार्यक्रम देश भर में, विदेशों में हुए, और लोगों में जो पिछले 6 वर्षों से योग के प्रति, आध्यात्मिक प्रति, भारतीय जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जो एक प्रचार हो रहा है, जन जागरण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी संदेश है पूरे विश्व के लिए। जिस प्रकार से हम पिछले कोरोना काल से अभी तक प्रथम वेव, दूसरी वेव, पहली वेव के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जहां तक उस वेव से हम बचे, उस लहर से जो हम बचे हैं बहुत बड़ी संख्या में भारत में, वो यही कारण रहा कि हम अपनी चिकित्सा पद्धतियों, अपनी भारतीय जो परंपरा है, हमारे जो रसोई में जो सब कुछ हमारे रसोई में है, चाहे वो जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, और उसके कारण ही हम बचे रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस चीज को हमने पालन किया और पूरे विश्व ने हमारा अनुसरण भी किया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर SS मिश्रा जी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को कि आपने ये बहुत सुंदर विषय रखा। पिछले वर्ष भी था, ये 22 जून को मुझे अवसर मिला था उसमें भाग लेने का। आज कुछ मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, क्योंकि व्याख्यान
तो बहुत हम लोगों ने 2 दिन में सुने हैं इस विषय पर। मेरा अपना जो अनुभव रहा पिछले 35 वर्ष का, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, और ओवरऑल मैंने जो सीखा, समझा और लोगों को ज्ञान दिया, वो होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर ही लिया। प्राकृतिक चिकित्सा भी उसी का भाग है, एक्यूप्रेशर भी उसी का एक भाग है, योग भी उसका एक भाग है, रेकी भी उसका एक भाग है, चुंबक चिकित्सा भी उसका एक भाग हिस्सा है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा शरीर, हमारा मन सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से जो देखता समझता है, वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य चाहे वो शारीरिक रूप से है या मानसिक रूप से है, और इसका जितना प्रभाव हमने देखा, समझा, सुना, वो इसी दौरान देखा है जो कोरोना काल में। आज भी लगभग 80 से 90% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। ऊपर से वो स्वस्थ दिखेंगे आपको, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, आपके साथ ऑफिस जा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन अभी भी 80 से 90% लोग मानसिक, जो जिसे हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं, उससे, उस दौर से गुजर रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो उथल पुथल पूरे विश्व में हुई, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके ऊपर भी पड़ा है। और इस श्रेणी में आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो सरवाइव कर रहे हैं वो छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे। उनके विषय में सोचिए, उनको देखिए, उनका जो व्यवहार है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। और इसके साथ में जो युवा पीढ़ी है, जो स्वच्छंद घूमना, अपना पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, तो वो सब गतिविधियां रुकने के कारण उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जिस पे हमें काम करना है वो है आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जो आने वाली एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हम उसको अभी भी देख रहे हैं, लेकिन उसके जो प्रभाव आने वाले हैं वो आने वाले समय में हमको दिखने वाले हैं। अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे भी दिखाई देंगे। तो उसको, उससे बचाव के लिए हमें क्या करना है? हमें ऐसा क्या, ऐसी तकलीफ, ऐसा क्या युक्ति लाएं कि वो उनसे बाहर निकल सकें? आज क्या हम जगह जगह पे काउंसलिंग सेंटर्स खोलें? क्या बहुत बड़ी संख्या में साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट करें, जो उन बच्चों को, उन टीनेजर्स को, उन युवा पीढ़ी को, और उसके अलावा जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी पेशा में, नौकरी में हैं, या जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, क्या उनको उनकी आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, और आने वाला समय उसी लिए है। तो हमें क्या करना है? योग दिवस पे हम हर वर्ष योग दिवस मनाते हैं और उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन अभी की जो आवश्यकता है वो योग का एक बहुत बड़ा जो भाग है, जिसको हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान से जाने से पहले की जो ऊपर की पूरा प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम, उनका पूरा अनुसरण करते हुए जब हम ध्यान क्रिया पे जाएंगे, तब हम उन जो जो प्रवृत्तियां हैं, जहाँ से हम लोगों को उस स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे, और जागरूक तब कर पाएंगे जब हम खुद स्वयं उसका अनुसरण करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरा, सबसे बड़ा जो हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, वो हमारा आहार है। और आहार के विषय में अनेक हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या उस आहार में हमारे प्रति हम अपने भोजन में कितना परिवर्तन कर पाए या करना चाह रहे हैं, तो वहां तक हम कितना पहुंच सके हैं, इसकी इसमें एक बार अब इसका अगर अगर पूरा आकलन करें, तो सुबह उठने के बाद से लेकर रात सोने से पहले, सुबह उठने के बाद रात सोने से पहले हमारा नाश्ता, यानी हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा लंच और हमारा डिनर, क्या हमने उसमें कुछ बदलाव देखा है क्या?
क्या हमने उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास किया है क्या हमारा भोजन कितना परसेंट अल्कलाइन है, कितना परसेंट एसिडिक है, क्या हमने उस पर गौर किया? क्या हमें उस पर गौर करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका बारे में बताते हुए आगे अगले हिस्से पे आऊंगा। अपना जो भोजन है, देखिए सुबह का समय जब हम देखते हैं तो सुबह का समय माना गया है फलाहार का। फलाहार या अंकुरित या कच्चा ऐसा माना गया है। और जो व्यक्ति इसको लेते हैं नियमित रूप से, उनके स्वास्थ्य में आप हमेशा एक अच्छा स्वास्थ्य उनको स्वस्थ दिखेंगे। दूसरा, जब दोपहर में हमारा भोजन है, वो भोजन पूर्ण रूप से भोजन के रूप में होना चाहिए। और शाम का भोजन जो है वो सूर्यास्त से पहले लेना चाहिए। जैसे हम जानते हैं जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद भोजन करना वर्जित है। उसके बहुत से कारण हैं और सभी कारण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं। और जो भी व्यक्ति, जो परिवार इसका अनुसरण करता है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। तो अपने भोजन का जो पहला भाग जो हमारा प्रातःकाल का है, वो अंकुरित या फल के रूप में लें। दोपहर का जो भोजन हमारा, उसमें पूरा चपाती, चावल, सब्जी, दाल जो पूरा लें, सलाद के साथ में लें। और रात्रि भोजन जो है वो सूर्यास्त से पहले लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, नहीं ले सकते, वो उनको लगता है कि वो, लेकिन फिर भी अगर 7 बजे से पहले उस भोजन को ले लें तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। रात को सोने से 3 घंटे पहले का भोजन, तो अपने भोजन को पूरा डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। तो प्रयास करें, और विशेषकर जिनकी आयु 35-40 वर्ष से ऊपर है, अगर वो रात्रि भोजन समय से पहले लेते हैं, यानी शाम को 6-7 बजे ले लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं ले पाते तो रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए उनको। तभी आगामी जो रोग आने वाले हैं उनसे हम बचे रह सकते हैं। चलेगा। तो अब ये इसमें एक चीज और है जोड़ने वाली कि हम अपने भोजन के साथ में पानी पीते हैं क्या? पीते हैं, भोजन से पहले और भोजन के बाद। इसमें थोड़ा सा अंतर रखना पड़ता है। आधे घंटे पहले पानी ना पिए और आधे घंटे के बाद पानी पिए, ताकि अपने भोजन को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होने में पूरा समय उसको मिल सके। ये एक बात हुई। अब हम बात करते हैं अपने निद्रा की। अभी इस समय के जो पिछला समय गुजरा, तो इसमें देखने को आया कि लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब हुई है। नींद समय से ना आना, रात में नींद खुल जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जो हमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जिसे हम बोलते हैं, मानसिक रोग का बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन के रोगी बहुत बड़ी संख्या में बढ़े। क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले समय में कोरोना काल में जब भी लॉकडाउन लगता था, अधिकांश समय अपना मोबाइल को यूज करने में लगाया। और मोबाइल फोन में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें नकारात्मक खबरें मिली, न्यूज मिली या जो भी मिला, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। और उससे निकलने के लिए जो हम जो क्रियाएं, चाहे हम प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, प्राणायाम करें, या डीप ब्रीदिंग करें, तो उनसे हम बाहर निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। जिन लोगों ने इसका अभ्यास किया वो काफी हद तक स्वस्थ रहे। और अभी एक समस्या और देखने को मिली कि जो बुजुर्ग लोग थे, जिनके बारे में कहा गया कि जो अब 60 या 60 से ऊपर के लोग हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। और उनका जो प्रभाव उनके तो पड़ा, उनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जिनको कभी भी हाइपरटेंशन नहीं रहा, वो लोग हाइपरटेंसिव हो गए। यानी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलने लगा, उनको डायबिटीज के सिम्टम आने लगे, उनको आर्थराइटिस के सिम्टम आने लगे, और इनको इंसोम्निया यानी नींद ना आने की समस्या उन लोगों में आने लगी। और इसके कारण उस परिवार में अनेक प्रकार के आपस में मतभेद भी इसी बात में पैदा होने लगे, क्योंकि बुजुर्ग जो थे उस घर के, वो बाहर नहीं जा पाए। उनके मन में जो चिड़चिड़ापन आया, और उसके बारे में उससे उनके अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो बढ़ा, उसका कहीं ना कहीं परिवार पे असर पड़ा। तो
अब हम बात इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक परिवार के रूप में अपने साथ साप्ताहिक कोई सत्संग या ऐसा समय मान लें कि हर 2 दिन बाद हम किसी एक विषय पर बातचीत करें, तो उससे भी हम काफी हद तक इसको छुटकारा पा सकते हैं। और ये समस्याएं आने वाले समय में, क्योंकि जब जब लॉकडाउन लगता है वो समस्या बढ़ती है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जो कोरोना काल में लगा उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है, उसका आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और हम लोगों ने पूरे विश्व में जिस प्रकार से इससे महामारी से लड़ने में अपनी भूमिका निभाई, तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो भारतीय रसोई थी वो बहुत कारगर सिद्ध हुई। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। कोरोना काल में जो चाइना से इसकी शुरुआत हुई, हम सब जानते हैं, वुहान से इसका शुरुआत हुई। और बड़े आश्चर्य की बात रही कि वुहान से शुरुआत होने पर वहां पे इसको काबू कर लिया गया। और वुहान के अलावा बीजिंग, संघाई, पेचिंग आदि शहरों में इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना केवल वुहान में था, और पूरे चाइना में ये फैल नहीं पाया और जल्दी कंट्रोल हो गया। तो कभी किसी ने इस विषय में सोचा नहीं या बातचीत करी क्या? किसी ने कभी डब्ल्यूएचओ ने सोचा इस बारे में कि बाकी पूरा विश्व तो चाहे वो इटली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे लंदन, ब्रिटेन हो, या भारत हो, या अन्य देश हो, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे ये बीमारी फैली। लोगों ने उसके बारे में अपना काफी जान भी गंवाई, बीमार भी रहे, और फाइनेंशियल रूप से जो इलाज कराया उससे भी वो लोग काफी परेशान हुए। तो ऐसा चाइना ने क्या करा, ऐसी कौन सी पैथी अपनाई जो उस कोरोना को अपने देश से हटा दिया? तो उस पर जब रिसर्च किया, जब बातचीत हुई, तो पता लगा तो वहां पे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM, जैसे अपने भारत में हम जिसे आयुर्वेद बोलते हैं, TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वहां की जो चिकित्सा पद्धति, तो उन लोगों ने अपने यहाँ पे उसका प्रयोग किया और बहुत जल्दी ही इस पे काबू पा लिया। वहाँ बहुत बड़े अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत बड़ी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे चाइना ने वो सब जो सामान बनाया, वो बनाया था पूरे विश्व के लिए, और वहाँ सप्लाई भी किया। और आज भी हम देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन आ रही है, वो सभी चाइना चाइना पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है। तो अपने देश में भी अगर इस पद्धति को, आयुर्वेद को ढंग से लागू किया और किया होता, तो शायद इतना प्रभाव, जो दुष्प्रभाव पड़ा, वो ना होता। लेकिन जब से सरकार ने आयुर्वेद को ज्यादा तरजीह दी, उसमें आयुष काढ़ा बनाया, या जो भी बनाए गए, उसके कारण काफी हद तक उसको रोकथाम करने में हम लोग सफल हुए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी चीजें, यानी हमारी रसोई, सब कुछ हमारे रसोई में है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता चुके हैं, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो जीरा है, चाहे वो अजवाइन है, चाहे वो सौंठ है, चाहे अदरक है, तुलसी है, मेथी है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनको हमने अपने घरों में प्रयोग किया और हम उसके कारण अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। आज भी अभी जैसे जून चल रहा है, आने वाला समय जुलाई, और जुलाई में जो बरसात, मानसून का मौसम आता है, मानसून में ये सब बीमारियां फिर से पैदा होती हैं और सिम्टम लगते हैं जैसे वायरस का, क्योंकि वायरल फीवर ज्यादा चलता है। और वायरस में ही ये भी एक प्रकार का वायरस जो कोरोना रहा, COVID-19, ये भी वायरस था। और इसके कारण प्रभाव जो पड़ा उसमें बहुत सी जाने गई, हम जानते हैं। तो क्यों ना हम अपने घरों में इन चीजों का पूरा ढंग से सही प्रयोग करें। साप्ताहिक अपने घरों में इसका, जैसे धुनी बोलते हैं, धुआं जलाना होता है, उसमें कुछ गाय का उपला, उसमें कुछ कपूर, लौंग, ऐसा रख के उसका धुआं करें। तो क्योंकि आने वाला समय बरसात का है और बारिश में ये सब वायरस बहुत बड़ा संख्या में फैलते हैं, उनसे बचाव के लिए हमें ये करना चाहिए। और साप्ताहिक एक बार कम से कम एक काढ़ा बनाकर, चाहे वो तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, ये बना के हमें एक पेय के रूप में अपने परिवार को देना चाहिए, ताकि उस चीजों से हम लोग बचे रहें। और अपने आहार को संतुलित रखना मतलब, क्योंकि आने वाले जो समय मानसून का रहेगा और इसमें जो बीमारियां बढ़ेंगी, उसमें चाहे वो वायरस हो, वायरल फीवर हो, चाहे वो पेट खराब होना हो, ये सब आने वाली समस्या होने वाली है। और उसमें हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने आहार को सबसे पहले ठीक करना होगा।
और नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी। सोशल मीडिया में हमारा अधिकांश समय बीतता है और उससे हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। उसका जितना कम से कम यूज कर सकें उतना ठीक रहेगा। और नेगेटिव न्यूज से हमेशा बचना चाहिए। मैंने देखा कि पिछले उस दौरान जब लॉकडाउन का पीरियड था, क्योंकि मैं वो बातें करूंगा जो प्रैक्टिकल जो चला है इस देश में, और वही लगभग पूरे विश्व में चला, कि जब लॉकडाउन के समय लोग अपने घरों में रहते थे, अधिकांश या तो न्यूज देखते थे या अपने मोबाइल फोन पे उसमें जो भी सोशल मीडिया पर आता था वो देखते थे और उसको फॉरवर्ड करते थे, क्योंकि उनको अपना समय बिताना होता था। तो नेगेटिव न्यूज के कारण उनके मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ा उसका चिंतन करना आवश्यक है। उस पर क्या क्या हुआ वो भी हमें देखना चाहिए। तो इसलिए उस ऐसी नेगेटिव न्यूज से हमें बचना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो। उनको हम ना देखें और ना ही उन्हें फॉरवर्ड करें, क्योंकि इसके कारण अनेक आपने मान लीजिए देखा कुछ और उसको आगे फॉरवर्ड किया, तो अगले व्यक्ति ने ये मान के उसको पढ़ता है, ये सोच के कि आपने इसको भेजा यानी इसमें कुछ सही बात लिखी है, तो वो भी उसको आगे फॉरवर्ड करता है। इस प्रकार से कुछ गलत बातें चली जाती हैं और जो लोगों के मन मस्तिष्क पर असर डालती हैं, और हमारा जो मस्तिष्क जो सोचता है वही हमारा शरीर करने लग जाता है। तो इसलिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को से बचने के लिए हमें ये नेगेटिव न्यूज से बचना भी जरूरी है। अपने आहार को ठीक रखना है और अपने जो सोशल जो हमारी एक्टिविटी है, सामाजिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हमें बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज करते तो ज्यादा अच्छा होता। समाज से हम दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ में उठना बैठना बातचीत करना, इसी कारण वो अपने उसके मन की कई व्यथाएं वो दुख सुख कह सकता है, वो अपने मन को हल्का कर सकता है। जहां पे अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो समझ लीजिए वो सब कुछ अपने मन के अंदर रखेगा, और जब उसके मन में जाएगा तो उस मनोविकार से जो रोग होने होंगे वो उसका इलाज किसी दवा में नहीं है। अल्टीमेटली उसमें हमें योग का सहारा लेना होता है, हमें आध्यात्म सहारा लेना पड़ता है, और आध्यात्म के सहारे से हम अपने अनेक रोगों को भगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ऐसा माना गया है कि 80% जो रोग हैं हमारे शरीर के वो हमारे मन से होते हैं, यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो बोलते हैं वो हमारे मन से 80% रोग होते हैं, जिसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ते हुए शरीर पर आता है, जो दिखाई भी देता है। क्योंकि किसी को ये बोला जाए कि एक उदाहरण के रूप में कि आप कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं या आप बीमार है क्या, ऐसा बात उसको 5 लोग 6 लोग बोल दें तो अगले दिन से आपको लगेगा कि शायद मैं बीमार हूँ, और वो उसका असर उसके दिमाग पे जाएगा और वो धीरे धीरे उसके अंदर कोई ना कोई रोग उसको घर करेगा और वो बीमार हो जाएगा। ये तो रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि ऐसा होता है। तो हमें अपने मन मस्तिष्क को पक्का मजबूत करने के लिए अपने सभी इमोशनल्स जितने हैं उनको मजबूत करना होगा, और जिस प्रकार से आज समय चल रहा है हमें उनसे निकलते हुए आध्यात्म रूप से मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना होगा। यही होलिस्टिक हेल्थ का एक फॉर्मूला है, जिसे कुछ मुद्राएं जो हम मुद्रा विज्ञान में यूज करते हैं, चाहे वो आपान मुद्रा हो, वायु मुद्रा हो, मृत संजीवनी मुद्रा हो, और ये मुद्राओं को प्रयोग करते हुए भी हम काफी हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा जिस प्रकार से करते हैं, संजीवनी मुद्रा यानी हार्ट मुद्रा, ये मुद्राओं का प्रभाव अपने शरीर पर हमें रहता है। और ये बहुत अच्छा है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए स्वस्थ रहें, और जितना भी हो सके अपने सोशल डिस्टेंसिंग, अभी तो बोला जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को ना बढ़ाएं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं, ताकि जो रोग है कोरोना इससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सोशल को हम आज ज्यादा बढ़ाएं, अपने लोगों से बातचीत करना। और एक मेरा मेरा एडवाइस और है कि जो समय निकला उसमें हमने देखा कि अभी जो प्रभाव लोगों को पड़ा है वो लोग किसी से मिलते हुए डरते हैं, यानी किसी के घर जाते हुए डरते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे अपनी लिस्ट बनाएं और 10 लोगों को फोन करें, उनके परिवार का हाल चाल पूछें, तो उनको लगेगा कि हमें कोई पूछने वाला है। अभी बीच में जो हुआ पिछले
जिससे मैं दिल्ली का एक उदाहरण देता हूँ आपको। दिल्ली में जैसा हुआ कि बिल्कुल सब कुछ बंद था और लोगों के पास, जो लोग डेली अपनी जिनकी रोजी रोटी कमाने जाते थे, उनका सब रोजगार बंद हो गया। तो ऐसे लोगों की सूची बना के जब हमने यहाँ पे एक सर्वे किया और परिवारों से मिले और उनको जो भोजन आदि हमने मुहैया कराया, दिलवाया, तो उन्हें बहुत खुशी मिली। फिर उसी प्रकार से हमने एक इस पे एक ये एक कार्य अपने हाथ में लिया कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए और परिवारों से ये विनती की जाए कि आप भी अपने जो आपकी फोन बुक है, उस फोन बुक में से प्रतिदिन 10 लोगों को फोन कीजिए, उनको हालचाल पूछिए और उनसे हालचाल पूछते हुए सिर्फ ये बोलिए कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ में हैं। आपको कोई चीज की आवश्यकता हो आप हमें बोलिए। यानी ये आपके 2 शब्द बोले हुए उस पर इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं कि अगर वो किसी भी प्रकार से नेगेटिव विचारों में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ में कोई है। तो ये हमें रखना चाहिए अपने ऐसे दुख की घड़ी में। यदि हम किसी को 2 शब्द बोल देते हैं अच्छे उसके भले के लिए और उसको लगता है कि हमें ये यहाँ से कुछ मदद, ये हमारी मदद कर सकते हैं कभी, तो वो बहुत खुशी होगी और उनको जो भी दुख है उनका वो कम हो जाएगा। तो हमें यही करना है। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन विषय जो है वो होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर है और योग के ऊपर है। तो योग के ऊपर तो हम लोग 2 दिन से बातचीत कर ही रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर और सब जानते हैं योग के विषय में। और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें इस प्लेटफॉर्म पर हुई हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने मन को, अपने मानस को ठीक रखना है और दूसरे को भी प्रेरित करना है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, तो केवल काउंसलिंग की आवश्यकता है और कुछ नहीं। हम किसी से बात करते हैं 10 मिनट बैठ के, उसका मन की बात व्यथा सुन लेते हैं और उसको कुछ सांत्वना देते हैं, उसको ये विश्वास दिलाते हैं आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। इतना भर करने से उसके मन में जो पॉजिटिव विचार आते हैं उससे वो ठीक होने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आभार प्रकट करूंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और डॉक्टर एस मिश्रा का, मुझे यहाँ आमंत्रित किया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक व्यवहारिक रूप से हम लोगों को कैसे कोरोना से बचाव किया जाए और कैसे व्यवहारिक जीवन में औषधियों का इस्तेमाल करके जीविका या घरेलू वस्तुओं का इस्तेमाल करके सुरक्षा की जाए, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही सरल रूप से प्रस्तुत किया। निश्चित ही सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप निरंतर ऐसे ही जब भी हम हमारे विश्वविद्यालय आपको बुलाए, आपको मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहे, अपना मार्गदर्शन देते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों के लिए समय निकाला और बहुत ही व्यवहारिक, शायद कट गए हैं, बहुत ही व्यवहारिक वार्ता आपने प्रस्तुत की और उम्मीद है कि आप भविष्य में भी हम लोगों को ऐसे अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके पश्चात तो अब सेशन यहाँ पर लंच का है सर। हाँ, 2 बजे लंच से का टाइम है हो फिर चुका है। नेक्स्ट सेशन। फिर 2 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे। और आलोक जी हैं? जी सर। डॉक्टर साहब से बात हो गई है? जी सर। अच्छा, कितने बजे जुड़ेंगे? 2 बजे सर, वो पहले ही जुड़ जाएंगे। हाँ, हमने शेड्यूल भेज दिया है सर। शेड्यूल भेज दिया है और बात भी कर ली। हाँ ठीक है। वो आपके बहुत ही चिर परिचित और लोकल और बहुत ही प्रतिष्ठित, पिछले 50 वर्षों से जो अपना जीवन समर्पित किए हैं योग के प्रति, डॉक्टर चैतन्य जी, 2 से 3 में रहेंगे। 3 बजे के बाद जो आप एक लिस्ट हमको भी भेज दीजिएगा, कौन कौन है संघर्ष जी। रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन वाली लिस्ट हमको भी भेज दीजिएगा। सर मैं एक कॉपी आपको सेंड करता हूँ। और एक कॉपी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भेज दीजिएगा। जी सर। वो इसको कंडक्ट करवाएंगे और हम सभी लोग जुड़ेंगे। पहले डॉक्टर चैतन्य जी का, तो डॉक्टर चैतन्य जी हमें लगता है आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप 2:30 बजे तैयार रहें।
पेपर प्रेजेंट करने वाले 2:30 बजे और कंडक्ट कराने वाले डॉक्टर मिश्रा जी भी 2:30 बजे तैयार रहें। ओके सर। ओके, सो थैंक यू। आप लंच करें, सब लोग आराम कर लें, फिर जुड़ते हैं। 1:45 बजे आप रिमाइंड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा झपकी वपकी लगने का डर रहता है। जी सर जी। सब लोग संघर्ष जी, संघर्ष जी, हेलो जी सर, मीटिंग में एंड करता हूँ, फिर इंफॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर कर दिया। अनुराग जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, ये कह रहे थे ना कि जो ग्रुप बना हुआ है सर, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट बाहर से हैं उनको भी टाइमिंग की सूचना मिल जाती तो थोड़ा सा वो भी प्रिपेयर रहते। सर सूचना, हाँ ग्रुप में तो डाल दीजिएगा दूसरा सेशन संघर्ष जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ अभी डाल दीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन 2 बजे से। ओके सर। ठीक सर। ओके, थैंक यू।